What if biology became your easiest subject? Let's make it happen. One concept at a time. This is just the beginning. If you want to understand biology, score better in your board exams, and actually enjoy learning it, follow my Instagram page and for complete YouTube lessons, subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye. आज हम बात करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की. फोटो मीन्स लाइट. सो इफ आई टॉक अबाउट ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट फॉर फॉर्मिंग फूड. सो फोटो ऑटोट्रोफिक का सिंपल मतलब है फोटो लाइट, ऑटोट्रोफिक as we have already studied, that means to make its own food. So here we can very well see that the plant is going to use certain reactants or certain raw materials and it is going to form a complex organic substance. What are the requirements now? So if I talk about the requirements are water from the soil through the roots, carbon dioxide through stomata, that is again utilizing the air, and chlorophyll from the chloroplast. Chloroplast एक ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल में होती है और डबल मेम्ब्रेन होती है. अब कमिंग बैक टू द रिएक्शन, बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड इट्स रिएक्शन. बायोलॉजी हैज टू फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, बोथ आर करेक्ट. बोर्ड्स में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस एंड इट्स रिएक्शन. अब photosynthesis has two reactions and both are correct. But from chemistry point of view, one equation does not get balanced through balancing method. Talking about the reaction now, the reaction is consisting of 6 water molecules, 6 carbon dioxide molecules, 1 glucose molecule is being produced along with oxygen. Now, what do we need to see here is that the other reaction also has the same figures. कैसे वो देखते हैं. अब जो second reaction है वो है 6 carbon dioxide plus 12 water in the presence of sunlight and chlorophyll will give you glucose and oxygen along with 6 water molecules. The difference here is यहाँ पर 6 water molecules यूज हो रहे हैं और यहाँ पर 12. यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है पर यहाँ पर निकल रहा है. सो दीज आर टू इक्वेशंस विच आर बोथ करेक्ट, बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से द सेकेंड इक्वेशन कैन नॉट गेट बैलेंस्ड यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोमाटा. Stomata, as we know, is required for certain processes. So let's first see the structure. Talking about the structure of stomata, stomata has two guard cells, as you can very well see here. These are kidney bean shaped and they have a central nucleus, which you can very well see here again. Chloroplast भी इनके अंदर होते हैं जो आप देख सकते हैं. Central stomatal pore भी आप appreciate कर सकते हैं यहाँ पर. Now, if I talk about stomata के functions क्या हैं, तो अभी हमने structures देखे, guard cells, nucleus, chloroplast and stomatal pore. आसपास कुछ surrounding cells होते हैं जिनको हम subsidiary cells भी बोलते हैं. What are the functions of stomata now? Exchange of gases, carbon dioxide या oxygen जो है वो exchange हो सकता है. Transpiration होगा, that is loss of water vapor in order to maintain the temperature of the plant and also to maintain a suctional pull for pulling of water through the soil. Now इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Next is water regulation, again somewhat related to transpiration. अगेन अगर हम बात करें स्टोमाटा की वर्किंग की, ऑन योर राइट यू कैन वेरी वेल सी द ओपन स्टोमाटा. स्टोमाटा की जो गार्ड सेल्स हैं, जब उनके अंदर पानी आ जाता है फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स, वी कॉल दैट प्रोसेस एज एंड ऑस्मोसिस. End osmosis, end means inside, osmosis means the movement of water molecules from a region of high concentration to a region of low concentration. तो end osmosis की वजह से जो guard cells है वो फूल जाएंगे, swell कर जाएंगे and जो stomatal pore है that's gonna open. अब आराम से exchange of gases and water vapor can take place.
लेकिन अगर मैं क्लोज स्टोमेटा की बात करूं, गार्ड सेल्स यहाँ पर श्रंक स्टेट पे हैं, मुरझाए हुए हैं। क्यों? बिकॉज नाउ द वाटर हैज मूव्ड आउट। पानी जो है गार्ड सेल से बाहर की तरफ जा रहा है into the subsidiary cells, and that's called exosmosis. ठीक है? X means exit. So when the water is moving out, that is leading to the closure of the stomatal pore. So बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. यू नीड टू गिव दिस as a 2-mark answer whenever asked. Next, we are going to talk about the next topic is chloroplast. Chloroplast एक double membrane organelle है. So you can very well appreciate the outer membrane and inner membrane here. दो membranes हैं. एक basement material है which is called stroma. इस stroma में होते हैं enzymes, DNA and ribosomes. इसके अलावा we have the starch granules and then the most important structure called grana. Grana is made up of thylakoids. Thylakoids are these coin-like structures. ये coin-like structures double membrane होते हैं and in double membranes के बीच में होता है the pigment called chlorophyll. So again, a very important question, where is chlorophyll? Chlorophyll is in the membranes of thylakoid. Thylakoid is double membrane and the space consists of chlorophyll. Very important. Now, pile of thylakoids is called grana या granum. Granum is singular, grana is plural. आपस में they are connected with a structure called stromal lamella. So these grana are connected together. So again, जब हम आगे बात करेंगे we'll get to know that photosynthesis जो है दो different parts में हो सकता है क्लोरोप्लास्ट की, depending on the availability of light. So today we have talked about photoautotrophic nutrition, जिसमें हमने बात करी है photosynthesis की reaction की. We have talked about the requirements, we've talked about stomata and its working, and about chloroplast. Next topic, next lecture में हम बात करेंगे light and dark reactions की. Till then, read, revise and excel. Thank you.